अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। टुडे आई एम गोइंग टू एबरफॉल्स वाटरफॉल्स देखने के लिए। बहुत ऐसे से प्लान कर रहा था, लेकिन आज प्लान हुआ था फिर कैंसिल हुआ। बहुत सारे लोगों का कैंसिल होकर हम लोग पहले काफ़ी लोग जा रहे थे, कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो नए दोस्त बने वो लोग भी जा रहे थे। देन अगेन अब प्लान बन चुका है कुछ लोगों का और कुछ लोग हम जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर। आज का वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था, बट स्टिल we few people are going, so I'll show you the beauty of Aberfalls. It's my first time also, so see you there. तो ये है जी एबरगोंग्रेगिन। नाम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बैंगर से 5 और 5D बस लें 15 मिनट में आप लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। रिटर्न टिकट जो है 4.80 में है। यहाँ से एक वॉक स्टार्ट होती है जो कि है ऑलमोस्ट अबाउट 30 to 40 मिनट्स। 1 घंटा भी लग जाएगा अगर ज़रा रुक रुक के स्लो जाएंगे। खूबसूरत नज़ारे यहाँ के। So we are here at Aberfalls and we just started walk towards Aberfalls. तो मौसम की सूरत हाल जो है वो बहुत ही बुरी है। इंतहाई तेज़ हवाएं, उसके अलावा बारिश बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ आने से प्लान जो है कैंसिल कर दिया। लेकिन ये वॉक इंतहाई खूबसूरत थी। ये थोड़ा सा आगे जाके रोड ख़त्म हो गया और एक ट्रैक स्टार्ट हो गया है इस ये जो रिवर कह लें, और इसके साथ साथ जो है खूबसूरत ऐसे बिल्कुल जंगल में एक छोटा सा ट्रैक स्टार्ट हो गया है। ये रोड आगे ख़त्म, और ये जो साउंड है ना, एक्चुअली इट्स अ थेरापी। साथ बारिश हो रही थी और साथ ये वाटर का साउंड, इट्स लाइक वाओ। लेकिन मेरे साथ जो भी लोग हैं, ये इनमें से 2 लोग जो हैं वो फॉरेस्टी से, ट्रीज़ से इनका ज़्यादा कनेक्शन है। तो ये तो ऑलमोस्ट हर जगह रुक के और ट्रीज़ को देखना, चीज़ें एक्सप्लोर करना, तो इट्स क्वाइट गुड थिंग। But yeah, we were enjoying. So look at this view. It's actually so beautiful. We just actually have so beautiful place. हमने just चलना start किया, it's a river. We are actually enjoying this weather. So there are the 2 tracks here, and the maps are all around on nearby the tracking. You can check the maps if somebody is here and somebody is coming, so you can check the maps, tracks. But the only thing is internet and network is not working while you are tracking this way, so check your plans and all that before coming. So this is a small trekking place, and the beautiful view and that sound of water falling sound, that was so amazing, and everything was so adventurous on that place. ये ब्रिज थोड़ा सा डेंजरस है, बट द व्यू फ्रॉम इन द मिडल ऑफ द माउंटेन्स, एंड इट वाज लाइक बूम, वेरी ब्यूटीफुल। एंड थोड़ा सा ही आगे जाके ये शीप्स जो हैं ये दिखेंगी आपको। बस आपने चलते ही जाना है इस ट्रैक पे, और खूबसूरत पॉइंट्स आएंगे। एंड इन द मिडल ऑफ समवेयर इन दिस ट्रैकिंग देयर इज़ अ प्लेस यू कैन जस्ट सिट, यू कैन हैव your drink, or always I just prefer when you are going somewhere, just take some snacks and that kind of stuff with you in your bag, and you can just have. So यहाँ पर मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, बट हवा इस कदर तेज़ थी कि मैं यहाँ पर कुछ बोल नहीं सका। एंड शीप्स जो हैं आपको सारे रास्ते नज़र आएंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे मिडल ऑफ द माउंटेन्स आप खूबसूरत बस प्लेसेस में ना वॉक कर रहे हैं। और ये दिस इज़ द मिडल ऑफ दैट प्लेस, लाइक इन द मिडल ऑफ दैट वॉक ये एक छोटा सा सेंटर बना हुआ था। यहाँ पर टोटल एरिया का जो है मैप्स, इंफॉर्मेशन, ऑल दैट यहाँ पर जो है वो इंक्लूड था।
लिटरली कुछ कुछ मोमेंट्स, कुछ प्लेसेस ऐसी आती हैं जहाँ पर फील होता है, कुछ क्या 90% जगहों पे ऐसा लगता है कि शायद इस ब्यूटी को, शायद इस ब्यूटीफुल प्लेस को कैमरा उस तरह से कैप्चर ही नहीं कर रहा जिस तरह से आप इसको रियल आई से देख रहे हैं। ये जगह इस कदर खूबसूरत थी, और काफ़ी जैसे ही हम करीब जा रहे थे वाटरफॉल्स के, ये देखें इस तरह से ये बहुत खूबसूरत प्लेस आ गई थी। यहाँ पर ये जो ट्रीज़ थे, यहाँ पर रेड कलर के कुछ जो है वो कुछ लगा हुआ था, फ्लावर्स नहीं थे बट एक डिफरेंट चीज़ थी। और यहाँ से जो है हमें थोड़ी थोड़ी सी वाटरफॉल्स जो हैं वो दिखना स्टार्ट हो गई थी। यहाँ हमने फिर थोड़ी देर स्टे किया और थोड़ा सा मतलब इंजॉय किया, बिकॉज़ आई थिंक सो जब हम लोग ऐसी ट्रैकिंग्स पे जाते हैं तो आपको वॉक करने का ही मज़ा आता है। आप एक्चुअल स्पॉट पे जाके भी आप इंजॉय करते हो, थोड़ी सी बैठते हो, उस नेचर को एक्चुअली फील करते हो। तो यहाँ से वो दूर से हमें वाटरफॉल जो है वो दिखना स्टार्ट हो गई थी। तो ये था कि लाइक वी आर वेरी क्लोज नाउ। इतनी लंबी वॉक नहीं है। अगर इफ़ यू आर इन बैंगर, इफ़ यू planning to go, it take almost about 3 hours to go there and return back to the Bangor, so it's very beautiful place। और यहाँ पर तो और नज़दीक आ गए थे we were like about बस हम लोग आ चुके हैं, and the moments we reached there, that was like totally heaven, totally heaven। So finally, इतनी ज़्यादा वॉक के बाद finally this is the place for what we were walking, and this was actually beautiful। Like if you're feeling bored in Bangor, if you're like you want to go somewhere, just go and sit in the front of this place. You will feel actually the nature, the sound of nature, like the sound of water, the sound of forest. That's, oh my god. The video is quite so long, but it's so beautiful. Just enjoy these views. Finally, it stopped raining, and there is no wind here. So after watching all this, हमने कुछ वहाँ पर time spend किया, and then again back to the bus station to Aberfalls. Again, it's quite difficult to pronounce some town's name in Wales. So I will put that name in the description or on a screen. You can just go on a Google and just write that if you want to go. So I didn't make enough
stuff because everything was same while coming back. So this was my today's video. I hope so you guys like this. If you really like this, please subscribe the channel, like the video, and share to others, those who are really interested to watch the nature and my vlogs. Thank you so much for watching. Take care till the next video. Goodbye.